of China, Excellency Mr. Lifeng, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, all the Honorable Federal Ministers and Parliamentarians, the Honorable Members of the delegation that is visiting us, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. And Hao. On behalf of Government of Pakistan, Syed Farooq Hassan and Sidra Iqbal would like to welcome all of you to this historic event marking a decade के 10 साल मुकम्मल होने पर ये तकरीब जारी है जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। So juicy. So yummy. Just so tender. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। Sorry, I'm late. It's okay. दिन कैसा रहा? Just catching up. Oh, hey! And I met new people. चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी with Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo. इसके 100% नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। I had a great time. Beautiful hair ready with a finger comb. करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट। नया सर्फ एक्सेल। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट। नया सर्फ एक्सेल। करेला
दादा जान को खाना पड़ेगा। जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। खबरों में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर आपको अभी लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब का सिलसिला जारी है, जिससे इस वक्त एहसन इकबाल खिताब कर रहे हैं। Accomplishments. CPEC has significantly contributed to resolving Pakistan's energy crisis, the successful completion of energy projects with capacity of 8,000 megawatts, which has brought much needed relief to our people and industries, paving the way for sustained economic growth. The infrastructure development projects, including motorways, highways, airport, and the Gwadar port, have opened up new avenues of trade and connectivity, boosting economic activity and facilitating the movement of goods and services. Joint ventures and industrial cooperation between our two countries have flourished, leading to the establishment of special economic zones. These zones offer immense potential for investment, employment generation, and technology transfer. Excellencies, now in phase 2 of CPEC, in light of the long-term plan, areas that have been identified include agriculture, science, information technology, mining, industry, and socio-economic development. The objective is to enhance the productivity and exports through fostering a cooperation in modern techniques and promoting research and development in these sectors, recognizing the importance of human capital in driving economic progress. कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का सिलसिला जारी है। और अभी खबर है कि LPG की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 280 रुपए का इजाफा किया है। LPG की 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपए 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। LPG फी किलो 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। LPG की जुलाई में फी किलो कीमत 177 रुपए 29 पैसे थी। LPG की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा किया गया है। इत्तलात हैं कि कराची की आबादी 2 करोड़ दिखाने की मंसूबाबंदी है। शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है। सबको गिना जाए, इससे कम कबूल नहीं करेंगे, ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी का। गुज़श्ता 5 दिहाइयों से सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में मर्दमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। आधी आबादी दिखाया हुआ ये शहर 1 करोड़ 60 लाख, उसको भी कम करके 1 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। अब हमें इत्तलात मिल रही है कि 1 करोड़ 95 लाख से और 2 करोड़ के दरमियान आबादी दिखाने का मंसूबा है। ये मर्दमशुमारी है, इसमें कोई मंसूबाबंदी का मामला गिनने के लिए मंसूबाबंदी होनी चाहिए। कितनी आबादी है और कितनी नहीं, ये फैसला मेज पर बैठ के नहीं हो सकता। और अब बात करेंगे जुल्म का शिकार नन्ही रिजवाना की, जो कि अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। 6 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना की हालत फिर बिगड़। डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दिए। अहले खाना ने बोल न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए दुआ का कहा है। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियाँ तोड़ने की दफात भी शामिल की गई हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियां जांबहक और बीवी जख्मी हो गई। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी।
पसंद की शादी का तनाजा, शौहर कत्ल, बीवी शदीद जख्मी। कराची के गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से सफदर हलाक और अजरा जख्मी हो गई। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। मियाँ बीवी को लड़की के घर वालों ने दावत पर बुलाया था, जहां अजरा के भाई अब्बास ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। अजरा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। उसके सर पर गोली लगी है। पुलिस को जाए वकुआ से 30 बोर के 3 खौल मिले हैं। मकतूल सफदर का ताल्लुक मुल्तान से था और वो वेटर का काम करता था। मुलजिम अब्बास रिक्शा ड्राइवर है। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, EV3 का नया रूट शुरू कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में खुश लिखा कि चेक पोस्ट 5 सफूरा से नुमाइश तक नया रूट शुरू किया गया है। ये 18 किलोमीटर का रूट है। अब खेल के मैदान से खबर दें कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम की शर्ट से जॉय की कंपनी का लोगो उड़ा दिया गया। पाकिस्तान ने कोलंबो स्ट्राइकर से मुआहदा करते हुए वाजे कर दिया था कि नाम बदलकर जुआ कराने वाली सरोगेट कंपनी की तशहीर करने वाली शर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम मैदान में उतरे तो शर्ट से लोगो गायब था, जबकि नसीम शाह और मोहम्मद नवाज की शर्ट्स पर लोगो मौजूद था। बरतानवी शहजादा विलियम का सरप्राइज, लंदन की सड़कों पर शहरियों को बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में बर्गर पेश किया। लोगों ने शहजादे को देखकर खुशी और हैरानगी का इजहार किया। Much. Yeah, that's Prince William. 4 burgers. Lovely. Morning, everyone. Nicely cooked, ready to go. और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। मेरी महबूबा बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हम। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। ना सब्सक्रिप्शन की झंझट, ना किसी रिटेलर के पास जाने की जरूरत। कॉल घंटे भर की, प्राइस सिर्फ मिनट की। तो लंबी कॉल से बैलेंस कटने का ना कोई डर। अभी टेलीनॉर 4G पे आओ और मोर से ज्यादा फायदा बार बार पाओ। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे।
पर ये कोर्ट के कपड़े? आज कोर्ट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद पप्पू से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। पूरी दुनिया में फैला पोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई, हांडे और पतीली मांगे, खूब घिसाई खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड, 3 गुना ज्यादा सफाई। पूरी दुनिया में फैला पोल रिपोर्टर्स का वसी जाल दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। शुक्राना करूं अल्लाह का, सुनी दिल की दुआ। शुक्राना करूं अल्लाह का, सूफी मैं हुआ। नाम है एतमाद का। Experience the luxury of Fassel Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle. कीजिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन और बन जाएं कारों के मालिक। काबिले भरोसा खिदमात के लिए रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का। Fastest growing brand of the year award, Olivia Hair Color. Olivia, शुक्रिया। Just bite it. Simply Sufi Express 'cause I like it. Simply Sufi Express 'cause I like it. ओह, कराची की निहारी। Don't worry मामा, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने दाग बताता है। This hourly clock is brought to you by चीन के साथ दोस्ती में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सदर शी जिनपिंग के नजरिए के मुताबिक काम करने के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा CPEC में तो $25 अरब की सरमायाकारी तवानाई आमदोरफ्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाई गई। हमारे लिए ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। हम CPEC का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस, सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मरकूज होगा।
चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने एजाज़ अता किया। लिफेंग का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा से तारुफ करवाया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आज़म का चीनी मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब में अस्करी क़यादत और आला हुकाम भी शरीक हुए। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। लाजवाल दोस्ती की आला मिसाल CPEC को 10 साल मुकम्मल हुए। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। चीनी नायब वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा तकरीब में शरीक। तकरीब में CPEC मंसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनीज को अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस्लामाबाद की सड़कें पाक चीन दोस्ती के रंगों में रंग गईं। दौरे के मौके पर इस्लामाबाद में आज और कल आम तातील। कल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस होगी। बलूचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे। मादनियाती मिट्टी बेचकर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत $6 ट्रिलियन है। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारी काउंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि उनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने $24 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सरकारी कारी के हवाले से कवानीन को डीरेगुलेट करेंगे और 1 विंडो ऑपरेशन होगा। नौकरशाही का बोझ खत्म करने के लिए मंसूबा ला रहे हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% पर आ जाने की तवक्को है। शरह नमू भी 2 से 3% रहेगी। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मिशन। नून लीग का पीपल्स पार्टी से रब्ता। मुशावरती कमेटी का मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और लीगी कमेटी के माबैन मुशावरत का आज तीसरा दौर होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आसिफ जरदारी को निगरां वज़ीर आज़म के लिए नामों पर एतमाद में लिया जाएगा। साबिक सदर निजी दौरे पर यूरोप में है। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जाँ बहक अफराद की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन जारी। रिक्कत आमेज मनाजिर। पूरा इलाका गमजदा। पाक आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल खार का दौरा। जख्मियों की इयादत की। इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल में तब्दीलियों के ऐलान का आज होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल्ड किया जाएगा। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में चंद तब्दीलियां की जाएंगी। पाक भारत मैच शेड्यूल से 1 रोज़ पहले खेला जाएगा। पाक भारत मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। जय शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में मैचेस के वेन्यूज़ में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। This headline news is brought to you by लाइफबॉय शैम्पू लाया नया डबल पत्ता सिर्फ 10 रुपए में। लाइफबॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। and मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफबॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। और अब लाइफबॉय शैम्पू लाया नया डबल पत्ता सिर्फ 10 रुपए में। लाइफबॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। जमी हुई है ये चिकनाई, ग्रीसी है देखो कढ़ाई। हांडी और पतीली मांगे, खूब घिसाई खूब घिसाई खूब घिसाई। अब सफाई होगी आसानी से, बिना रगड़े बिना झंझट। मैक्स लिक्विड 3 गुना ज्यादा सफाई।
दुनिया बोल है रोजाना सुबह 9 बजे। द स्पेशल रिपोर्ट पीर से जुम्मा दोपहर 4 बजे। आज की ताज़ा खबर पीर से जुम्मा शाम 5 बजे। अब पता चला पीर से जुम्मा शाम 7 बजे। तज्जिया पीर से जुम्मा रात 8 बजे। ऐसे नहीं चलेगा पीर से जुम्मा रात 10 बजे। नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ पीर से जुम्मा रात 11 बजे। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ हफ्ता शाम 5 बजे। अब बात होगी हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे। बस बहुत हो गया हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। तब्दीली हफ्ता और इतवार रात 10 बजे। द इंस्टा शो विद मतीरा हफ्ता और इतवार रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। अब पता चला बाजौड़ में दहशतगर्दों का वार, खैबर पख्तूनख्वा का अमन बर्बाद, मुल्क की फजा सोगवार, दहशतगर्दों की वापसी का कौन जिम्मेदार? मईशत, सिक्योरिटी या मर्दमशुमारी की आड़, जनरल इलेक्शन पर मंडलाते खतरात, धड़ाधड़ कानून साजी और निगरान हुकूमत पर इख्तियारात की नवाजिशात, इस सब के पीछे क्या है जवाब? इंसदाद इंतहा पसंदी बिल, हुकूमती सेनेटर्स की शदीद तनकीद, बिल का मतन सियासतदानों के लिए शिकंजा करार, इत्तेहादी जमातों का सख्त एहतजाज, चेयरमैन सेनेट बिल ड्रॉप करने पर मजबूर। बाप का जाम मुस्लिम लीग नून के नाम, बजिंजो का पीपल्स पार्टी को दूर से ही सलाम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में दरार, जाम कमाल के नून लीग से मामलात, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पार्टी बरकरार रखने पर इसरार। कमसिन रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, बच्ची के खालू के हौलनाक इंकशाफात, खोपड़ी पर सख्त चोट के खतरनाक असरात, अगले 48 घंटे अहम करार, जज की अहलिया के खिलाफ FIR, इक़दाम कत्ल की भी दफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत ने इतने कानून अपनी 1.5 साला मुद्दत में पास नहीं किए जितने आखिरी दिनों में करना चाह रही है। अवामी मफादात की बजाय जाती मफादात पर कानून साजी जमहूरियत के मुंह पर कालक मल रही है। अगर हुकूमत डटी है लेकिन जो इंसाफ पसंद हैं वो हुकूमत में रहकर भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इंसदाद इंतहा पसंदी बिल की मुखालफत नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी की शरी रहमान और JUI के कामरान मुर्तजा ने की और इसे तमाम सियासी जमातों के लिए शिकंजा करार दिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने तो यहां तक कह दिया कि इस बिल के बहुत दूर रस नताइज हैं, अगर इसी तरह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें। हुकूमती इत्तेहादियों की मुखालफत पर चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया, मगर शुनीद यही है कि हुकूमत ने जैसे 1 घंटे में कोरम पूरा किए बगैर 29 बिल पास करा लिए, कुछ ऐसे ही इस बिल की मंजूरी भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके असरात क्या होंगे, ये ख्याल सब सियासी जमातों को परेशान कर रहा है। एक और मामला इंतखाबात और निगरान वज़ीर आज़म का भी है। कुछ तज्जिया निगारों की राय है कि सिक्योरिटी खदशात हों, माशी हालात या फिर मर्दमशुमारी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात आम इंतखाबात के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और कुछ बईद नहीं कि आम इंतखाबात इल्तिफा का शिकार हो जाएं और आज के हुकूमती इत्तेहादी बरवक्त इंतखाबात की दुआइयां देते हुए नजर आएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में तहरीक इंसाफ देती रही है। मगर अभी कुछ दिन की हुकूमत बाकी है और PDM सरकार की पूरी कोशिश है कि कानून साजी के जरिए या फिर मुकदमात के जरिए वो तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दे। दलील इसकी ये है कि छुट्टियों के बावजूद चेयरमैन PTI के लिए आज भी अदालत लगी और कल भी उनकी तलबी है। कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTI के लिए अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। क्या इन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है? हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? इसी से आगाज करेंगे सैयद मुजम्मिल शामिल। आज जिस तरह से हमने ये प्रोसीडिंग देखी है तोशा खाना की, ये तो लग रहा है कि छुट्टी पर थे लेकिन ड्यूटी रोस्टर नया आया, वो ड्यूटी पर हुमायूं दिलावर साहब वापस 5 दिन के लिए 5 अगस्त तक। तो लग रहा है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि नहीं जी ब्रेक है तो 3 बजे तक आ जाए, खान साहब सुबह तक आ जाए। बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं, सिद्दीक जान से इस बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कोर्ट के हवाले से तो पूरी दुनिया उनको मानती है, कोर्ट रिपोर्टिंग पर। इस वक्त चीनी नायब वजीर आज़म तकरीब से मुखातिब हैं। 坚定站在一起，携手同心，砥砺前行，弘扬好铁杆友谊，统筹发展与安全，开展更高水平、更广范围、更深层次的合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新的台阶，为两国
乃至地区的和平繁荣做出更大贡献。预祝活动取得圆满成功，祝愿中巴友好万古长青。中华人民共和国主席习近平2023年7月31日。尊敬的夏巴兹总理、女士们、先生们、朋友们，我很荣幸作为习近平主席特别代表，同各位相聚在美丽的伊斯兰堡，共同庆祝中巴经济走廊启动10周年。习近平主席高度重视发展中巴关系，高度重视中巴经济走廊建设。在刚才宣读的贺信中，习近平主席充分肯定了中巴经济走廊建设取得的积极成果和重大意义，对走廊建设和中巴合作给予了深切关怀，提出了殷切希望，为下一步走廊的发展和中巴务实合作做出了战略指引。中方愿意同巴方一道，按照习近平主席贺信指明的方向，以更大的力度、更高的标准、更高的效率，推进中巴经济走廊建设，将其打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程，为中巴全天候战略合作伙伴关系持续发展注入新的动力。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中巴经济走廊启动建设10周年。10年前，10 years ago, President Xi Jinping 共建“一带一路”的伟大倡议和亲、诚、惠、容周边合作理念。巴基斯坦积极响应，中巴经济走廊应运而生，蓬勃发展，成为共建“一带一路”重要先行先试项目。2015年，习近平主席对巴基斯坦进行了历史性的国事访问，中巴关系提升为全天候战略合作伙伴关系，确立了中巴经济走廊1+4的合作布局，走廊建设步入快车道，中巴经济走廊建设秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神，开创了共建“一带一路”构建人类命运共同体的成功实践。10年来，中巴经济走廊的建设扎实推进，成果丰硕，成为一条充满活力的开发走廊。在双方的共同努力下，以走廊建设为中心，以瓜达尔港交通基础设施、能源、产业合作为重点的合作布局，从蓝图变成现实。瓜达尔港已经具备全作业能力。The Sukur Multan motorway and the upgraded KKH Phase 2 are now open for traffic. The first cross-border optical fiber cable between China and Pakistan, Pakistan's first urban railway Orange Line, and the first HVDC transmission line between Matiari and Lahore were put in use. Sahiwal coal-fired power plant was completed ahead of schedule at an impressive Punjab speed. Power plants in Port Qasim, Hub and Karot were completed and put into operation. The Rashakai Special Economic Zone is up and running, and cooperation on agriculture, science and IT and people's well-being is making steady progress. CPEC has become an important driver for regional economic growth. It has set an example of mutual trust and common development. Over the decade, CPEC has promoted development and delivered shared benefits. It has become a corridor of well-being and prosperity. According to statistics, CPEC has brought $25.4 billion of direct investment to Pakistan, created
thousands of jobs and added 500 kilometers of highways, 8,000 megawatts of electricity, and nearly 900 kilometers to the national core transmission network. It has significantly changed local economy and livelihood. Guada Port has turned from a small fishing village to a regional logistics hub, and children in Fakir now have bright new schools. Women in Tar have now become professional truck drivers, and commuting time in Lahore has been greatly reduced, and many people no longer have to worry about frequent power outages. CPEC has brought significant changes to many ordinary people and has set an example of people first and shared benefits. Over the decade, CPEC has promoted women cooperation and has become a corridor of friendship. CPEC is a cooperation platform and is also a bond of friendship that brings our two peoples close together. It is a new benchmark for China-Pakistan friendship. Over the decade, Chinese engineers and Pakistani workers have worked hand in hand and in close coordination. They have set up buildings and built roads in some of the most impossible places, performing so many touching scenes of collaboration, excellence, mutual trust, and mutual support. During COVID, workers from the two countries overcome the difficulties to ensure the smooth operation of completed projects and steady progress of ongoing ones, writing stories of mutual support and women cooperation. CPEC opens up a new chapter of China-Pakistan community with a shared future in a new era, and set an example of mutual support and good neighborliness. Here, I pay tribute to the diligent and courageous Pakistani people and to Chinese and Pakistani workers who participate in CPEC. It is your support, contribution, and hard work that turns CPEC from vision to reality. Your Excellency, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, friends. Looking forward, China-Pakistan cooperation and CPEC will embrace new historical opportunities. China is following the guiding principles of the 20th CPC National Congress to apply the new development philosophy, foster a new development paradigm, and pursue high-quality development, and advancing the rejuvenation of the Chinese nation through a Chinese path to modernization. Pakistan is also exploring a path to industrialization, modernization, and sustainable development. We should continue to aim for high-standard, sustainable, and livelihood-enhancing outcomes, step up coordination and cooperation to build an upgraded version of CPEC, to break new grounds for high-quality development of CPEC, so as to promote an even closer China-Pakistan community with a shared future, bring more benefits to our two peoples, and make our own contributions to regional or even world development. To this end, I would like to propose the following suggestions. First, jointly building a growth corridor. We need to stick to the set blueprint and implement the long-term plan of CPEC. We should strive for an early start of the ML1 upgradation project, improve the overall planning for industrial park cooperation, and further promote practical cooperation on various fronts to help Pakistan achieve sustained, steady economic growth and achieve national prosperity. Second, jointly build a livelihood-enhancing corridor. We need to put the people first and deepen cooperation on industry, agriculture, health, education, training, and people's well-being, and to carry out more small and smart livelihood projects. We need to develop human resources, create more jobs, so that more dividends of CPEC can be shared among the Pakistani people.
Third, jointly build an innovation corridor. We need to follow an innovation-driven approach, give full play to relevant working groups, and expand cooperation on new areas such as high-tech, mobile communications, e-commerce, AI, and smart cities, to inject more impetus to CPEC with innovation. Fourth, jointly build a green corridor. We need to uphold green development and forge greater synergy between the Green Silk Road with the Green Pakistan initiative. We need to prioritize resource saving and environment protection, step up cooperation on green investment, infrastructure, agriculture, and disaster relief, and follow a path of green and low-carbon development. Fifth, jointly build an open corridor. We need to uphold openness and inclusiveness, actively step up communication and coordination with regional countries, welcome the participation of third parties in CPEC, and promote the extension of CPEC so as to advance regional connectivity and economic integration, to share cooperation opportunities, and pursue common development and prosperity. Ladies and gentlemen, friends, the world today is marked by volatility, and the changes unseen in the century are unfolding faster. Humanity is facing unprecedented risks and challenges. Not long ago, Chinese Premier Li Qiang and Prime Minister Shehbaz had two productive conversations and meetings, reached many new and important consensus. China is now carefully implementing these consensus. China and Pakistan are good neighbors, friends, partners, and brothers. Our joint effort against challenges will play a significant role to peace, development, and stability of our two countries and the region. China firmly supports Pakistan in safeguarding its national sovereignty, independence, and territorial integrity, and in pursuing national unity, social stability, and economic prosperity. We are sure that the diligent and courageous Pakistani people will create a better future with their own hands and focus on development to hold the future of Pakistan firmly in their own hands. The road ahead for Pakistan will be wider, and the prospects for Pakistan's development will be brighter. China and Pakistan are bonded by shared mountains and rivers and common interests. Our two peoples share a time-honored and rock-solid friendship. CPEC is an accelerator of cooperation, new engine for growth, and a planter of friendship. It is further deepening our all-weather friendship, and we have gained valuable experience from it. First, sticking to strategic guidance. President Xi Jinping and the Pakistani leader attach great importance to CPEC. They have devoted personal efforts to use every meeting and exchanges of letters to exchange views, which provides top-level design and sets the direction for CPEC. Staying committed to extensive consultation and joint contribution. On the basis of full consultation, we identify cooperation areas, priorities, and models, and bring more Chinese investment and technologies to Pakistan, and more quality Pakistani products to the Chinese market and homes of Chinese households, thus realizing complementarity and winning cooperation. Staying committed to people's well-being. CPEC belongs to the people. It covers large areas and benefits a large population. Whether it is infrastructure such as power plants, roads, and ports, or it is exchanges and cooperation in industry, science, and training, CPEC always follows the people-centered approach and is committed to creating a better life for the ordinary people. These precious experiences come from practice, and we should cherish them. We believe that as long as we implement the guiding principles of President Xi's message,
and implement the important consensus reached between Premier Li Qiang and Prime Minister Shehbaz. China-Pakistan cooperation and CPEC in the next decade will make new progress in the next decade, and China-Pakistan relations will embrace an even brighter future. May Pakistan enjoy prosperity and its people happiness. May China-Pakistan friendship be everlasting. Chin Pak Dosti Zindabad. Thank you. चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि CPEC के तहत फाइबर ऑप्टिक्स समेत मुख्तलिफ मनसूबों को अमली जामा पहनाया गया। उन्होंने कहा कि CPEC दोनों ममालिक के दरमियान फ्लैगशिप मनसूबा है। ये कहना था चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का। इस्लामाबाद में CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब इस वक्त जारी है, जिससे चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। And fraternity are the phrases used to describe Pakistan-China friendship. This is such a unique and unprecedented relationship which has always ignited the imagination of our people. Ladies and gentlemen, to celebrate this momentous occasion, the milestone of completing 10 years of CPEC, one of the salient activities is issuance of a commemorative postage stamp and a beautiful memento. The stamp will serve as a tangible and enduring tribute to the accomplishments made through the CPEC. Moreover, this memento will represent the enduring friendship and collaboration between the Iron brothers. Ladies and gentlemen, I am honored now to request the chief guest of today's ceremony, the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency Lifeng, and Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly come up on the stage and personally reveal the commemorative stamp and coin to mark the decade of China-Pakistan Economic Corridor. A big hand for both the dignitaries, ladies and gentlemen. This is a historic moment for CPEC, 10 years down the journey, and it's just the beginning. Ladies and gentlemen, these designs that will soon be revealed not only commemorate 10 years of CPEC, but the lasting friendship between the two countries. Ladies and gentlemen, may we now request the Excellencies, the Honorable Vice Premier, and the Honorable Prime Minister to kindly place their hands on the globe. And as they do that simultaneously, the digital reveal. For a historic moment, ladies and gentlemen, the decade celebration of China-Pakistan Economic Corridor. The senior leadership of Pakistan and China present here. Excellencies, may I request you to please step forward as we now have the commemorative memento being presented. Ladies and gentlemen, this memento has been prepared in Pakistan and it captures the essence of the successful partnership for economic cooperation between the two countries. It's a beautiful reaffirmation of our commitment to strive together to make a community of shared future. And this picture will go down in history, absolutely, Siddha. May I now request both the dignitaries to kindly move to the commemorative envelope, which is designed by the Chinese side and has been brought all the way from Beijing to Islamabad. Both the dignitaries will sign on it and endorse the China-Pakistan Economic Corridor project. This selects the 4 representative projects, that is 1+4, initial layout of the China-Pakistan Economic Corridor, and highlights the long-lived China-Pakistan friendship. Ladies and gentlemen, a historic moment for Pakistan and China. We have the senior leadership, the Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, accompanied by the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency Lifeng. Ladies and gentlemen, this envelope has come from Beijing and indeed is a historic moment. With this, we would like to take this opportunity to thank His Excellency, Mr. Lifeng, the Vice Premier of China. Thank you, sir, for being present here. And I would now like to request the Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly address the August gathering. Ladies and gentlemen, put your hands together for the Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif.
Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Vice Premier Lifeng, honorable members of the Chinese delegation, honorable ministers, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. Excellency, thank you very much for visiting Pakistan and have time to celebrate jointly Iron Brothers from China and Pakistan, the 10th anniversary of CPEC. This great journey of friendship between Pakistan and China started immediately after China won its independence back in 1949. But this journey was accelerated through sincerity of purpose and commitment by many great Pakistani leaders, starting from late Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, who made very valuable contribution in terms of promoting this friendship. And then, in between, all subsequent leaders were very committed to promote this friendship. And therefore, this is a unique friendship, a unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation, people from all walks of life, all political parties, all institutions, they are committed to this great friendship. And then in April 2015, Your Excellency, President Xi Jinping was very kind to visit Pakistan. Of course, that was a visit which was postponed earlier for reasons well known to us and not to be described here. Had that delay hadn't taken place, these CPEC projects would have blossomed and some of them would have been completed much earlier. In April 2015, this agreement of CPEC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Shehbaz Sharif. And then we saw at lightning speed projects were undertaken and completed. This is still in our memory that at that point in time, power outages had crippling impact on our industry and agriculture. Our exports were damaged irreparably because foreign importers would not trust Pakistani exporters because we didn't have energy to manufacture those export orders. Our agriculture had become pale. Our industry had come to a grinding halt. And thousands of workers were out of jobs. Excellency, this was the time when CPEC came to Pakistan's rescue. And as you said, that some of the projects were completed
in a record period of time. This was under the joint leadership of President Xi Jinping and Prime Minister Shehbaz Sharif. I will not go into details because those have been very ably explained by you and Dr. Professor Chaudhary H.N. Iqbal. Suffice it to say that an amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created, and production and exports were enhanced. I think this was a game changer, and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. And Vice Premier, you were a linchpin. At that time, you were the chairman of NDRC. And I know for a fact, because I had dealt with you in those days along with my colleagues, you were very helpful to support CPEC projects speedily. And my friend, Vice Minister Sun Weidong, he was our ambassador, not only ambassador of China, but ambassador of Pakistan as well. He was very supportive. He was very helpful. I can go on and go on. And this story of great friendship will not end, but the night will fall. Vice Premier, we had other segments today in this ceremony. We had to drop a few of those because of devastating incident of terrorism which took place in Bajor yesterday. And our heart goes out to the families of the departed soul. And this is, again, a very important subject of our joint cooperation. We have to jointly deal with this menace. Pakistan has paid a huge price. Almost 80,000 Pakistanis have laid their life to fight this menace of terrorism, and we defeated it effectively years ago. And it is a great commitment and a great manifestation of our will to fight this menace till it is wiped out, not only from the face of Pakistan, but also in this region and in an extended way globally. Excellency, now we are entering the second phase of CPEC, which is even more interesting and extremely helpful in promoting investments, progress and prosperity in Pakistan and also in the region. And you have highlighted important areas of this second phase of CPEC, which is high quality development, which is growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. There is an effort, Your Excellency, to bypass Pakistan by some countries in this process of connectivity. And I have no doubts that Pakistan and China together will fill in the gap, and this corridor, which already has been established between North and South,
will extend in many ways to include the entire region and also other parts of the world. Gwadar, you have rightly pointed out, was a few years ago was a small village. Today, it is a busy city with huge potential in times to come. Gwadar port will become very busy, and I think CPEC will ensure Gwadar one of the most busy ports in the region. And our government is placing due focus and efforts to develop this port with full speed and commitment. We have allocated sufficient resources. Electricity has now been available in Gwadar. Drinking water is available, and further developments are on the way as I speak. Excellency, Pakistan is going to turn around its economy by the grace of God through our multiple initiatives and programs. But let me, at this point in time, thank you and thank President Xi Jinping and thank Chinese government and people for supporting us at this critical juncture. Loan rollovers by Chinese banks, including Exim Bank, Bank of China, and other commercial banks, state to state safe deposits to the tune of billions of dollars in the last 4 months has been of immense help to us. And I can assure you from the core of my heart that myself, my colleagues sitting here, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, Finance Minister Hisab Dar, Planning Minister Ahsan Iqbal, and all other colleagues sitting here and government officials, and the people of Pakistan in the four nook and corner in this country will remain ever so grateful to you and President Xi Jinping for supporting Pakistan financially in this very difficult time. And we shall never forget this very kind generosity and favor of yours for all time to come. But I want to say and add something here. We want to move away from these loans and borrowed monies, sums of monies. We want to move away from having handouts, aid and doles. We really want to stand on our own feet. We really want to show to the world that our people are brave people. They have great tenacity, great energy, and they are capable of facing the most difficult challenge and yet survive. The discussion and negotiation with IMF has been one of those challenges. And together with your support and our brotherly country's support, we have sailed through this storm successfully. But now is the time for us to have a reflection, introspection, and pause, and to carve out our way forward, which will make Pakistan and Pakistani look decent, respected in the eyes of our friends and foes. And the only way forward is to emulate Chinese model of growth. Even today, with these very difficult circumstances around the globe, your
annual growth is still around 5.5%, which is commendable. And of course, in time to come, it's going to further improve. Your Excellency, this is where we need your support. This is where we need your expertise and learn from your experience. It is not a joke to take 800 million people out of the pit of poverty. Today, they are great contributing hands in the development of China, just in a matter of 3.5 decades. It's no less than a miracle. It has not happened anywhere else in the world. And therefore, it has happened only through visionary leadership's dynamism and hard work and untiring efforts, and a journey of sweat and blood. I would be extremely grateful that today we agree to announce joint working groups to evaluate this growth model and convert this into, under Pakistan's prevailing circumstances. And I want to assure you, this nation, 220 million people of Pakistan, all political parties, political leadership, military leadership, judiciary, doctors, engineers, on one thing, there is total unanimity that China is our true and most sincere friend. Here is the time that we should now make use of this opportunity, because time and tide wait for none. This is an opportunity we want to cash upon. I would like to request you and propose that let's constitute a joint committee to look into these matters and come up with a sound proposal, and which we can jointly implement with great speed. And I have no doubts, ladies and gentlemen, that Pakistan soon one day will stand on its own feet. We won't have to beg and borrow. We will generate our own resources through untiring efforts, as the Chinese have done. We will alleviate poverty as China did. We will provide jobs as China did. And that will be the biggest gift we can offer to our ancestors. That will be the biggest source of satisfaction to those millions who gave their lives for Pakistan. Ladies and gentlemen, let's celebrate this great day, this great event in this spirit, and inshallah we will be marching in that direction very, very speedily. Pakistan, Chin Dosti, Zindabad. Pak-China friendship, Zindabad. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम है। चीन ने तरक्की का सफ़र हिम्मत और लगन से तय किया। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद बात करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान मुनफरिद दोस्ती का आगाज़ हुआ है। ये दिन बहुत अहम दिन है और इसको मिलकर हमें सेलिब्रेट करना है। China is an all-weather friend. I would like to reiterate that during all times, all seasons, all weathers, good or bad, China has always stood with Pakistan, whether it's economic collaboration, cooperation, whether it is military collaboration. China has always been there for us. Siddha, you must have noticed, as Prime Minister Sahab also mentioned, there was a very unfortunate incident yesterday in Bajor. We lost more than 50 lives, martyrs, and the whole nation is in a shock, and we are deeply grieved. We stand by our people and all stratas of our public
whether they are artists, any society they belong from, we all stand with those people, with those families who lost their dear ones. Ladies and gentlemen, Pakistan is often referred to as a resilient nation. Unfortunately, these incidents of terrorism, of hate crime, and of intense emotions as they come out, they have caused a loss to every strata of society. There's not a single household in Pakistan that doesn't know someone that they have lost personally. But we are resilient. सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा? पार्टीज के लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। ना सब्सक्रिप्शन की झंझट, ना किसी रिटेलर के पास जाने की जरूरत। कॉल घंटे भर की, प्राइस सिर्फ मिनट की। तो लंबी कॉल से बैलेंस कटने का ना कोई डर। अभी टेलीनॉर 4G पे आओ और मोर से ज्यादा फायदा बार बार पाओ। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा? पार्टीज के लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए।